Emergency power of the president. Emergency power of the president. Who will discuss? You can do one thing. You can कैमरा ऑन करके बोलिए. मजबूरी है तो नहीं बोल सकते बट बोलो. इमरजेंसी पावर. कोई नो नीड टू सी द बुक. ओके, जो याद है, जितना याद है उसमें से बताइए. ये होगा रिवीजन हम लोगों का. बताइए. Ma'am, there are 3 emergency powers. National emergency, where breakdown of constitutional machinery. Yes. Third is financial emergency. Okay. National emergency means that when the security of the country is threatened by war or any internal revolt or aggression. In that case, the president can announce a state of emergency in the state or in the whole country. Second is breakdown of constitutional machinery. Under this, when the government of a state is not functioning according to the according to the constitution, then the president's rule is imposed in that state. This is the second emergency power. Third emergency power is financial emergency, and in which if the financial condition of the country is not stable, then then the president can announce a state of emergency in the country. But the president can announce these 3 emergency powers only on the advice of the Council of Ministers. Okay, very good. Next question is, which points are included in legislative powers of president? बोलो अविका. पॉइंट्स. अंशिका को बोलना है. अविका कौन बोलेगा? Yes. लेजिस्लेटिव पावर में हाउ मेनी पॉइंट्स? No bill passed. हाँ फिर से बोलो. No bill passed by any of the houses of the parliament can become a law without the signature of the president. Approval of the president is essential to pass a money bill in Lok Sabha. Next. Any other? कृतिर बोलो. कृतिर और पॉइंट आगे. Ma'am, don't repeat it. Ma'am, the president is a integral part of the Indian Parliament. Ma'am, every year the first session of the Parliament begins with his address. Next. Ma'am, the 12 members. Yes. Ma'am, the 12 members of Rajya Sabha are nominated by the president from amongst the distinguished. If it is difficult to remember, then only you can write 12 members are nominated in Rajya Sabha by the president. अगर आगे बढ़ाने से आपको दिक्कत होती है, याद नहीं आ रहा है, तो आप शॉर्ट लिखकर वो पॉइंट को मेंशन करके आप वहां फुल स्टॉप डाल सकते हैं. ठीक है. गलत लिखने से अच्छा शॉर्ट. हाँ ऐसे बोलिए आप आगे बोलिए. नॉमिनेशन से रिलेटेड एक और पॉइंट बच गया. He can also nominate 2 Anglo-Indians from the Lok Sabha. Yes. For the Lok Sabha. Yes. Ma'am, he can select a persons from the field of art, science, literature, sports, social service, etc. Okay. Anshika, you want to answer some question? Yes, ma'am. Which word is you have to remember to describe the executive power of president?
Appointment. Appointment. Very good, Anshika. Now, to whom he appoint? President appoint Prime Election Minister, Commission, Finance Council Commission. of Minister, Prime Governor, Minister, Council of Minister, Chief Justice. Justice of Supreme Chief Court, Justice. Justice Members of High Finance Court, Very Commission, good. member Auditor of General of India, Auditor Attorney General, General of Attorney India, General of India. Election Commission and Finance Commission. Finance Commission. All of you, very good. आनंद, अंशिका, अविका, वेरी गुड आंसर. आपको पूरी तरह से ये याद हो गया है. वेरी गुड. अब मैं पूछती हूँ, if only you have to write what is the national, what do you mean by national emergency and who implement this, तो इसका क्या जवाब होगा? Ma'am, please repeat the National question. emergency. What is the meaning of national emergency and who implement it? Ma'am, can I tell? हाँ, emergency. एक मिनट. If the security of the country is threatened by war, हाँ, if the security of the country is threatened by war or internal armed rebellion, the yes, president can declare the state of emergency to the whole country. एक सेकेंड. मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था. हमने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इमरजेंसी. तो आपको देखिए, इसीलिए मैं पूछी थी. आपको ये पूरा याद है, ये आंसर, ठीक है ना? एक सेकेंड. नेशनल इमरजेंसी आपको याद है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको थोड़े से लैंग्वेज में क्या लाने थे? चेंज लाने थे. आपको बोलना था, हाँ, इफ our country is threatened by war, ठीक है, or external aggression, or internally it is facing some internal problems, rebellion माने विद्रोह, then it is इंटरनल को बाद में बोलना, एक्सटर्नल को हो गया, देन दिस इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट इट. ठीक है, ही कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर द होल कंट्री. तब ये सुनने में अच्छा लगेगा कि नेशनल इमरजेंसी क्या है. हमारे देश को बाहरी या आंतरिक कुछ बड़ा खतरा है तो हमारा नेशन खतरे में है. ठीक है, चलो इसी तरह से अगर हम पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीचमेंट एंड इन व्हिच केस इम्पीचमेंट. हाँ बोलो. Ma'am, the process through which the president is removed is called impeachment. She or he can be removed by the office for the resolution of impeachment, which is passed by both the houses of the parliament by not less than 2/3 majority of the total membership. Okay. He can be removed because he can be if president had done some violation. If president had done some violation activity, then he can be removed. Okay. If he violation activity nahi, if he violate the constitution, then he or she can be removed by a resolution of impeachment. Okay. अच्छा, अब बताइए आप कि what do you mean by single transferable vote system? Ma'am, it is a system which is used to elect the president of India. Okay. Under proportional. Yeah, ma'am. Under the system, what happens is that the voters can make a list of the top 3. थ्री मत मेंशन करना. 3 नहीं, ऐसे बोल सकते हो कि
अच्छा तुम अपना बोलो मगर 3 मत मेंशन करो, कोई दूसरे बच्चे, कोई नहीं चीटिंग करेगा, कोई नहीं, देखो बंद कर, सब लोग कैमरा ऑफ किए हुए हो, इसीलिए कहती हूँ कैमरा ऑन करो, बट कोई बुक नहीं खोलेगा, अपने से बनाकर बोलो। हाँ बोलो सृजो, 3 मत मेंशन करो। हम हिंदी बोले? ओके मैम। हम हिंदी बोले, आप ट्रांसलेट करो। कई लोग हैं, हमें अकॉर्डिंग टू हायरार्की में लिखना है किसको हम पहला दूसरा वर्ड नहीं यूज करूंगी। आप बताओ, अब बताओ। और कोई? मैम कैन आई टेल? each voter has a list of their preference have a list of their preferences. They have to prefer who is their first choice, Lok Sabha, second Yes, ma'am. choice, है ना? तो they have to mention their choices. ओके चलो, तो इसे कौन और अच्छे से बोलेगा? 53 बच्चे हैं क्लास में, कोई भी बोलिए, कुछ ही गिने चुने लोग आंसर कर रहे हैं, और बच्चे बोलिए। मैम बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। मैं बोल रही हूँ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम? बताओ वृष्टि। Under this system, it is the essential for secure the fixed quota of votes by the members of Lok Sabha, Rajya Sabha and legislative assemblies of state. ये तो तुमने शायद इलेक्टोरल कॉलेज वाली, आगे चले गए थोड़े से, ठीक है। इलेक्ट हैज टू सिक्योर, ये दूसरे पॉइंट पर आप चले आए हो, उसके कोटा पर, ठीक है। इसमें बोलना है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, व्हाट इज दिस? तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस with the system of proportional representation by means of which is called single transferable vote system, in which each voter is expected to indicate their preferences, to give their choices of the nominees of the जिसको सृजा 1 और 2 और 3 बोल रही थी, वो ना बोलकर गिव देयर प्रेफरेंसेस और चॉइसेस ऑफ द नॉमिनीज। वो लोग कौन है? अभी उन लोग को नॉमिनेट किया गया है, जिसके कि हम चॉइस बता रहे, ये मेरे फर्स्ट चॉइस है, ये मेरे सेकंड है, ये मेरे थर्ड है, इस तरह से। वो तो मैं समझाई थी, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि what do you mean by electoral college? Ma'am, it consists of the members of Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Parishad and Vidhan Sabha. Okay. कोई भी बच्चे, इतने बच्चे क्लास में हो, क्या सृजा ने कोई एक वर्ड छोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड? Yes, ma'am. कौन सा वर्ड? जल्दी बताओ। Legislative assemblies of state. ना, वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलो, या फिर आप या तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली बोलिए, या फिर आप बोलिए कि क्या कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद। इलेक्टोरल कॉलेज में आपको क्या बोलना है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद। और पुष्कर, लेजिस्लेटिव मतलब ही होता है लॉ मेकिंग बॉडी, है ना? लेजिस्लेटिव मतलब ही होता है लॉ मेकिंग बॉडी। तो आप कोई भी 2 हाउसेस बता सकते हैं। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट डू यू मीन बाय एमोल्यूमेंट्स? Ma'am, the facilities or ma'am, what is that called? Wages given to an official. Very good. Very good. मैम Another सैलरी, फी और प्रॉफिट। emoluments. अंशिका बताओ।
सृष्टि? Ma'am, Yes, ma'am. A salary, fee, or profit. ओके, आपने मीनिंग एकदम और दूसरे तरीके से बताया. मतलब एमोल्यूमेंट्स का एक और सिमिलर वर्ड Ma'am, after the Some allowances. allowance. the president is immunity. given, Yes. हाँ. Alliance. बताइए what type of emoluments and immunities president get during his service? See, he get a free residence, establishment charges, free medical treatment, a mobile phone and internet, etc. facilities. Very good. Yes. ma'am. Okay. Any other answer also? No, na. Oh. Yes, ma'am. Yes. Okay. बोलो अंशिका, कुछ बोलना चाहती हो? Ma'am, Kritir. कृति बोलो. Ma'am, after the retirement of the president, he can given the pension of rupees 1.5 lakh per month Okay. throughout the and ma'am, he also gets a free residence, establishment, mobile phone, etc. Okay. Ma'am, हाँ. Any other? ma'am, when he was the president, he was given as the government of India gives her or him the Rashtrapati Bhavan, which is at New Delhi, ma'am, and gives him her monthly salary of rupees 5 lakh. Okay. Very good. What are the function of Union Council of Minister? What are the function of Union Council of Minister? No cheating. No cheating. What do you mean by क्या होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? अच्छा, फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बताइए. फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. Ma'am, he acts as the link between the cabinet and the president. Forms the Council of Ministers. It form Council of Ministers. Council of Ministers to He preside advises over the the president meetings of the to cabinet dissolve as the well Lok as Sabha Council of before its Ministers normal to expiry term. coordinate the The working President of of India various cooperates departments, and to act coordinates as a various link between the departments. president and the cabinet, to advise the president to summon or to summon the session or to dissolve the Lok Sabha. Summon prorogue. ओके. अच्छा, ये कुछ और बच्चे आंसर दीजिए. फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ये हमेशा ये पूछा जाता है. सृष्टि बोलो. सृष्टि 1 by 1. ठीक है. सृष्टि 8A. Yes, ma'am. हाँ बोलिए. The main powers of Prime Minister are to form Council of Ministers, to preside over the meetings of the Cabinet as well as Council of Ministers, to advise the President to summon or the session or to dissolve the Lok Sabha before its term expires, to act as a link between the President and the Cabinet. Okay, very good. Very good. Any other person? Kritir? No. Okay. अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, what do you mean by coalition government? बहुत important. Coalition government and collective responsibility. It is a government. Ma'am, It is in a case government. of no single party get a clear majority, then the Majority. leader of the two or more parties combine together to No. Come and join. combine together. Come and join hands together. बोलो, आगे बोलो. This to is form the government. It is a government formed by an alliance of two or more political parties. okay. Okay. कैसे बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे कि when no single party gets clear majority, the leader of two
or more party combine together or Combine. and join hands together. ये आपको ज्यादा याद रहेगा. They come and join hands together. एक साथ हाथ मिला लेते हैं to form a government. This type of government is called coalition government. अब आप लोग बता दीजिए. वृष्टि बताइए तो आप बताना चाह रहे हैं वृष्टि? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए तो वृष्टि. वृष्टि आपने रेज हैंड किया हुआ है. वृष्टि नहीं बेटा. अच्छा बताइए. कलेक्टिव can I tell? रिस्पॉन्सिबिलिटी. This means that all the ministers All the together are ministers became answerable. equally responsible to defend their acts and decisions. Answerable This to is the called parliament for any decision taken together. Equally responsible for equally responsible. So they think together. Defend their acts. हाँ, आगे कुछ बोलोगे? And they swim and sing together. हाँ हाँ. They work as a team. All the ministers become equally responsible to defend their acts and decision. To defend their act and decision. जो वो करते हैं, जो decision लेते हैं, all are equally responsible. So all the ministers swim and sing together. This is called collective responsibility. चलिए नेक्स्ट पूछती हूँ आपको. नेक्स्ट पूछती हूँ. एक सेकेंड. what qualification do needed the president to become a president? What qualification should be needed? Ma'am, He or she should He or she must be a citizen of He India. or she should completed a 35 years of age. voters list He or she should be qualified to be member of the Lok Sabha, and he or she should not hold any office. Okay, very good. He should not be government servant. Of India must be a citizen of India. She Yes. had completed the year. She had completed 35 years of age. Hmm? He must be qualified to be a member of Lok Sabha. He does not hold any office Hmm? of profit under the government. Under the government. Okay, very good. अच्छा. What happened when any president fall ill for a long duration or give resignation? Ma'am, the vice And the president vice president The of vice India president takes of over the India can responsibility take over his to office. officiate such The president. vice presidents took over all the responsibilities. This president took over the responsibility. And आगे बढ़ाओ. Suppose कि 3 नंबर के आंसर. आगे बढ़ाओ और 2-4 लाइन बोलो. Till the new president is not Till the new elected, president is The elected. new election president must be held elected within within 6 That means he will all enjoy the power of presidents. given to the president. 6 months. Very good. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आप इतने जल्दी रिप्लाई कर रहे हो. आपके दिमाग में एकदम बात आ गई है. अच्छा, हम लोग क्या कल किसी और चैप्टर का एनुअल में तो सारे चैप्टर्स आएंगे. किसी और चैप्टर का कर लूं रिवीजन? देखिए, इसके बाद थर्सडे के बाद से दिवाली के बाद हम लोगों को 1 वीक मिलते हैं. 1 वीक में हम लोग क्या करेंगे? 1 वीक में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी, वो क्या है? चैप्टर 6. एक बार चैप्टर 6 का कंफर्म हो लेती हूँ तो वो चैप्टर शुरू करेंगे. मतलब कि हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे. 1 वीक में हम लोगों का वो हो जाएगा. फिर आते हैं मंथ दिसंबर. दिसंबर में हम लोग एक हिस्ट्री, एक क्या करूं? कल स्टार्ट करूं? आपका बॉल झाड़ू जैसा क्यों लग रहा है? हाँ बेटा, क्या बोली प्राची? प्राची अगेन, रिपीट अगेन. क्या बोली बेटा? बंद कर दी माइक.
कुछ बोल रही हो प्राची?